ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟਮਕ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ लिंक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ਦੇ ਨਾਲ मैम? अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, गैस हो रही है, so any kind of stress, any kind of psychological disorder, it starts the major symptom, the underlying symptom that we say, patients come and say ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ कि एंजाइटी है? Relax. I think that triggers the patient more. When you tell कि relax करो, कुछ नहीं है, instead of validating, you're trying to actually make the patient feel more uncomfortable when you say कि मैंने कुछ हो चुका है, हुने मैंने relax होने कह रहे हैं। Yeah, like I'm really having a problem and you're telling me to relax, it's not possible. हाँ, anxiety ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 100%। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਬਟ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਸਟੇजेस ਹੋਣਗੇ, ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਟੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਬੀਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਟ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਵਿਦ meditation, exercise, yoga, with what you deal with it? Through counseling, through art therapy, only online that we did. Yeah. Today she's running a beautiful business on her own in Delhi. That's great. She is a big stylist. She's running her business. She's doing so well in her life. That's the beauty of counseling. That's the power of counseling, which people really don't know about. They think 1500-2000 रुपये देके क्यों गल्ला करने जाए। वो पेशेंट कहाँ से टेस्ट कराकर, डॉक्टर्स को दिखाकर, घूम फिर कर हमारे पास पहुँचते हैं, और फिर हमारे विद गॉड्स ग्रेस, आई हैव ऑलवेज सीन मेरे पेशेंट्स बहुत कुछ ट्राई करने के बाद 7 to 8 सेशंस के बाद they got better. They are doing so much well in their lives. Anxiety plus coffee खतरा है या ठीक है? थोड़ी ਜਿਹੀ घबराहट हुई, चाह पी लो, घबराहट हुई, चाह पी लो, ऐसा कर लो। Suddenly after having a coffee, he started with palpitations. घबराहट शुरू हो गई। वो वहाँ से उठ के इमीडिएटली रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, मेरी ECG चेक करो, मेरी एको चेक करो, मैनू बहुत बेचैनी हो रही है, हो सकता है अटैक ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। It was nothing, it was exactly anxiety. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪਲਕ ਜੈਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਆਰਟ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪਲਕ ਜੈਨ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਨਿਕ अटैक या डिप्रेशन ना रिलेट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये चारों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। टेंशन इज समथिंग जिसमें आप, इट इज़ सडन, मुझे टेंशन है, मैंने इंटरव्यू में बैठना है, दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वरी। वेयर एज एंजाइटी इज जहाँ पे लॉन्ग टर्म है, हम कहते हैं 2 to 3 वीक्स से अगर बंदे नू घबराहट हो रही है या किसी तरह की कोई बेचैनी है,
ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਓਕੇ Panic attack is again sudden. It is very, for example, I'm scared of snakes. तो मैं उसको देख के snake को देखते ही मेरे को panic attack आ जाएगा. So that is short term, that is sudden. Whereas anxiety is purely long term. Without fear, also we can have an anxiety attack. ओके इट इज कंसिस्टेंट इट persistent इज़ परसिस्टेंट एंड ये बहुत कॉमन है. आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप अपना काम कर रहे हो सडनली यू विल हैव पैल्पिटेशन, सडनली आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, बेचैनी शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. और कभी कभी कुछ लोग पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि हाथ पैरों में कीड़ियाँ रेंग रही हैं. ओके यू नो इट्स नॉट एग्जैक्टली शिवरिंग बट कोई डेफिशिएंसी करके भी हो सकता है चीज़ा यूजुअली ना डॉक्टर्स बड़ी बारी ये कहते हैं रूल आउट करने के लिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाओ, चेक करवाओ. और इम्यूनिटी वगैरह लो होती है, डेफिशिएंसीज आती हैं. Yes, लेकिन उसका अंडरलाइंग सिम्टम एंजाइटी होता है. अब लेट्स से मैग्नीशियम किसी का लो आ रहा है तो भी ये होता है, कीड़ियाँ रेंगना, बेचैनी होना, रात को नींद ना आना. जी लोग उसको भी विटामिन डी लो हो, B12 कम हो तब भी बोलते हैं ये सारे सिम्टम्स. लेकिन अंडरलाइंग सिम्टम इनका एंजाइटी हो सकता है. तो वो रूल आउट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट टू मेक श्योर. एंजाइटी अगर 2 से 3 हफ्ते से अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, यस गैस हो रही है, जलन हो रही है छाती च, हॉल पै रहा है, राइट it could be या ਅੱਛਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟਮਕ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ as a psychologist and as a in our psychology also we say gut और brain का direct connection है. ओके सबसे पहले अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपका गट इफेक्ट होगा. एक वेगस नर्व होती है जो गट से ब्रेन तक जाती है. ओके 80% ऑफ द सिग्नल्स हमारे गट से ब्रेन को जाते हैं. देयर इज़ नो अदर वे अराउंड. सो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसे कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम कहते हैं हॉल पे गया सुन के. हाँ दैट इज एग्जैक्टली इट्स अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गट. गट से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है थ्रू दिस वेगस नर्व and it affects, so they are related to each other. In fact हमारे जितने भी patients आते हैं they start with कि इत्थे कुछ हो रहा है, हाँ इत्थे कुछ हो रहा है. They don't realize it but it's kind of a stress क्योंकि 90% of the serotonin which is present, the gut produces serotonin. ओके मैम 90% serotonin is produced. What is serotonin? Yes, It's a ma'am. mood stabilizer. सॉरी मैम It's a mood stabilizer. अच्छा मूड Mood stabilizer. अच्छा जी करेक्ट. तो अब आप रिलेट कर सकते हो कि कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या कोई भी ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ. ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਔਨ ਦ ਰੋਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ ਹਾਂ that is exactly because of that gut and brain are related to each other. So any kind of stress, any kind of psychological disorder, it starts the major symptom, the underlying symptom that we say, patients come and say ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾ Yes, that's the only, which is why they are related. ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ कि एंजाइटी है? देखो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला टेंशन है शॉर्ट टर्म, ठीक है. टेंशन आपको डेली पर ये टेंशन जन्म दे रही है एंजाइटी ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ. हाँ बिल्कुल. टेंशन तो एंजाइटी ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की टेंशन है, आपने कल इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है, वो आपकी शॉर्ट टर्म टेंशन है, शॉर्ट टर्म है ना. मेरी इंटरव्यू खत्म हुई, इंटरव्यू खत्म, मेरी टेंशन I'll be खत्म, okay. you'll be okay. Yeah. Then you will not go to the next step of anxiety. करेक्ट. एंजाइटी या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मिनिमम 2 to 3 वीक्स अगर आपको परसिस्टेंट सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जो कि सेम है. सिम्टम्स जिਵੇਂ मैम जिवें एंजाइटी के अगर हम बात करें, बेचैनी होना,
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ, ਹੌਲ ਔਰ ਇਹ ਮੈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਰਿयलाइज ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਰਿयलाइज। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ he came to me and he told me he was sitting at a coffee shop having coffee. Suddenly after having a coffee he started with palpitations, घबराहट शुरू हो गई। ओके। वो वहाँ से उठ के इमीडिएटली रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, मेरी ECG चेक करो, राइट, मेरी एको चेक करो, मैनू बहुत बेचैनी हो रही है, हो सकता है अटैक ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। इट वॉज नथिंग, इट वॉज एग्जैक्टली एंजाइटी। सो यू आर सिटिंग नॉर्मली and suddenly your body starts shivering, suddenly घबराहट शुरू हो जाती है। these are all anxiety symptoms, these are all underlying anxiety. Why I'm again and again saying underlying, क्योंकि ये नजर नहीं आते, हाँ, ये सिर्फ महसूस होते हैं और डायग्नोज भी नहीं करते मैम। जब मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाओ तो वो ये चीज़ नो डायग्नोज भी नहीं करते। पहली बार really जब that आपको I'm- एंजाइटी होएगी ना, तो मतलब आपको पता नहीं होगा कि एंजाइटी है और पेट में हॉल पड़ रहा है Yeah. या घबराहट हो रही है, हाँ. या तुसी मेडिसिन के डॉक्टर को जाओगे या तुसी गैस्ट्रो को जाओगे। ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू। राइट। हाँ क्यों जी। जाओगे? पेट च हॉल पेड़ है, शायद कॉन्स्टिपेटेड है, गैस हो रही है, छाती से जलन हो रही है, बड़े कॉमन सिम्टम्स है। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? गैस्ट्रो के पास, ये हो रहा है। या हम मेडिसिन के पास चले जाएंगे, घबराहट हो रही है, वो बीपी हाई ना हो गया और बीपी लो ना हो गया और शुगर लेवल्स ना गिर गए हों। दीज आर द रेगुलर सिम्टम्स जो आप किसी भी एडल्ट से सुन लोगे कि हाँ ये हो रहा है। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ? 100%। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਬਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਸਟੇजेस ਹੋਣਗੇ, ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਟੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। They are not directly related to it, but with time eventually ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। with age it comes ना? Not with age, but let's say a patient is suffering from anxiety. हाँ जी। First time it starts, obviously there are 3 levels to it: mild, moderate, severe. जी। Correct? अब कोई नया पेशेंट है मेरे पास जिसको पहली बारी बेचैनी शुरू हुई, घबराहट हुई, नींद नहीं आ रही, काफ़ी दिनों से देख रहा है, काम कर रहा है, रेगुलर रूटीन में अपना चल रहा है, लेकिन पूरे दिन में आधा पौना घंटा घंटा ऐसा होता है कि बड़ी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, फिर रात को भी इनफैक्ट नींद नहीं पड़ती। ठीक है, अगले दिन फिर उठा, काम पे चला गया, कर लिया, फिर थोड़ा टाइम इन बीच में आया जिसमें शुरू होगी। अब ये चीज़ परसिस्टेंटली हो रही है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लेकर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही, आपको भूख नहीं लग रही, आपको बेचैनी हो रही है, आपका पेट अपसेट है, आप कम खाओगे, ठीक है, आपका सॉल्ट इनटेक कम होगा। हाँ जी। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड कि बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल्स गिर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप जब आपके खाने की रूटीन खराब हो जाएगी, नींद पूरी नहीं लोगे, किसी तरह की घबराहट है, उदासी है, बेचैनी है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे कि मैनू कुछ हो रहा है। लेकिन ਇਹਦਾ अंडरलाइन सिम्टम एंजाइटी हो सकता है, हो सकता है। मैम ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल। ओवर ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ दैट थिंकिंग बिकम्स ओवर। करेक्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू जैसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप किसी भी थॉट को बार बार सोची जाओगे, हाय मेरे नाल ए हो गया। लेट्स से एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट यू go through and you keep it in your head, right? Let's say losing somebody in your life, that's a trauma for anyone, right? That person is not able to move on. वो बैठ के मैं ही क्यों, मेरे नाल ही क्यों होया, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। हाँ जी मैम। मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा,
So what is overthinking? Simultaneously thought process चलता रहता है, एक से बढ़कर एक next question, एक thought, दूसरा thought, धीरे 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 या तो बंदा एंशियस फील करना शुरू होगा, ग्रेजुअली एंजाइटी से वो डिप्रेशन पे आ जाएगा. Anxiety, then there is a depression. जरूरी नहीं है डिप्रेशन पे, एंजाइटी तो शुरू हो ही जाएगी. What I'm trying to tell you is that overthinking is related to anxiety. The more you think, the more anxious you feel about it. Anxiety, फिर जब anxiety बढ़ जाती है ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ overthink ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ पे ਆਏ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਲੈਂਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ ਮੋਰ ਐਂਸ਼ੀਅਸ. ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? Migraine is, I think, entirely different from anxiety. Okay, it has nothing to do with the psychological thing? It could be. I am not aware of that. Okay. Because I haven't seen any patient who's come with migraine complaint. I'm sure when it comes to migraine, migraine की field अलग है, उसके symptoms अलग होंगे. Anxiety में usually मैंने बहुत कम सुना है कि patients आके ये बोलते हैं कि सिर दर्द हो रहा है. अच्छा. Migraine, usually it starts from, I think, here and then it goes up here. I haven't heard of patients coming with anxiety. Even if they don't know about it, that they are suffering from anxiety, they usually come and tell me very basic symptoms, जिससे हमें बहुत easily समझ में आ जाता है कि ये anxiety है. क्योंकि वो जब हमारे पास आते हैं ना, we are the last stop. Yes. तो वो अपने गैस्ट्रो के टेस्ट, पेट के टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, सारा कुछ करा के आते हैं हमारे पास. जब उन्हें जो ये डॉक्टर्स होते हैं गैस्ट्रो के या मेडिसिन के, ये कह देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तब उन्हें ये रियलाइज होता है. एंड स्टिल दे हैव दैट बेचैनी, स्टिल दे हैव दैट घबराहट, स्टिल दे हैव दैट कॉन्स्टिपेशन, स्टिल दे हैव दैट एसिड रिफ्लक्स, स्टिल दे हैव दैट स्लीप डिसऑर्डर. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ. ਪੇਟ ਦਰਦ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ, ਦੈਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ, ਦੈਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਗੈਸਟਰੋ ਵਨ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੈਸਟਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਫॉर द ਸਕੈਨ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ. ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ. ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵਾਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ. ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟਸ ਹੇਅਰ. That is exactly what my point is. कि psychologist is the last stop for any client, for any person. ਯੈਸ. ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦਾ. It plays a very important role. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मुझे लगता है किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो रहते हैं. ठीक है. सोशल मीडिया के अगर बेनिफिट्स भी होंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. सुबह उठते हैं हम, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम चलाते हैं. जी. 2 दिन पहले या कल, आई थिंक 2 days बैक, अजीत पवार का हमने देखा. यस मैम. एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, राइट. व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपने उठते ही इंस्टाग्राम चलाया, आपने ये न्यूज़ देखी. नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होगा शिट, आई मीन यू नो इट्स, मतलब हो गया, बुरा लगा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन फिर आप अपना रूटीन शुरू कर देते हो और सब ठीक हो जाता है. यही अगर कोई एंजाइटी वाला पेशेंट होगा या वो किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होगा पेशेंट होगा, उसको ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी. अब इसमें उसका पूरा दिन यही सोच के निकल जाएगा कि अगर मैं प्लेन में होता या मैं कभी प्लेन में जाऊं, मेरे साथ ऐसा हो जाता, अगर मैं होता इसकी जगह, यू नो, एवरीथिंग नेगेटिव. ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ? एवरीथिंग क्यों आंदा रहता क्योंकि बार थॉट्स बार? पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है. आप देखो ईमान, सबकॉन्शियसली दिन में 10,000 से भी ऊपर थॉट्स हम हमारे दिमाग से गुजरते हैं. सबकॉन्शियसली. कॉन्शियसली व्हाट वी आर डूइंग हियर, सबकॉन्शियसली अभी भी दिमाग में चल रहा होगा बहुत कुछ, बहुत कुछ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? वैसे ही पूछ रही हूँ मैम. मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ है, हाँ, छुट्टी होने वाली होगी, टाइम होने लगेगा. यू नो, सबकॉन्शियसली, स्पेशली एज अ वुमेन, यू हैव मल्टीपल रोल्स.
जी टू प्ले इन अ डे, राइट? जी अब मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ देखो टेंशन तो रहती है। अगेन अगर मैं ये जो अब थॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन Yes, अगेन। yes. अब हमने वो न्यूज़ देखी, हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे ना, हमने वो न्यूज़ देखी, ठीक है? कोई एनजाइटी का पेशेंट होगा, वो उसको ये न्यूज़ बहुत अफेक्ट करेगी, ठीक है? आजकल तो वैसे ही इतना सोसाइटल प्रेशर है, पीपल हैव दिस न्यू जेनजीज फील फोमो, यस fear of missing out. This is a new trend where मेरे लिए बर्थडे पोस्ट नहीं डाला, या उस मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए पोस्ट नहीं डाला. You know, these are very small moments which makes you so much anxious that you don't even realize it कि सोशल मीडिया हमें कितना इफेक्ट कर रहा है हमारी डेली रूटीन में. यस तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं. देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर when it is about social media. There is FOMO, right? There is a lot of information which is there. Up to, I also feel millennials के बाद का जो टाइम है, जितने भी adults हैं या जितने भी Gen Zs हैं, जी in fact our generation I'm talking about, या when we go back, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी क्या करते थे? उठते सार पापा दादू क्या करते थे? न्यूज़पेपर पढ़ते थे. राइट न्यूज़पेपर इज फिल्ड विद नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. यस उसमें पॉजिटिव कम होता है, उसमें नेगेटिव Negative ज़्यादा होता है. क्या वो एंजाइटी के पेशेंट बन गए? वो उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्रेंड तो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है. इनफैक्ट इट्स I वेरी understand. कॉमन. यू गेट अप, यू freshen up yourself and you sit and read newspaper, right? राइट Everything is there in the newspaper. They read the newspaper, they get to their work, and they're normal, right? We millennials, the Gen Zs of today, any information that they read or they come across, it hits them so badly that the problems like anxiety, depression, panic attacks have come up. So I think moderate usage of social media and that break in a day from social media is very important. ਮੈਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ काम तेज करना या जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ या वो that is entirely different. That's called bipolar. What is bipolar? ਮਤਲਬ ਆਈਵ It's ਸੀਨ ਦ either- ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਾਰਮਲ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ डिप्रेशन टू. अब अगर मैं आपसे पूछूं एज अ साइकोलॉजिस्ट आई माइट बी एबल टू फिगर आउट. आई गो टू अ पार्टी, यस हाँ दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क. नॉर्मल बंदा है, हाँ हंस रहा है, खेल रहा है, जी ठीक है, मज़े कर रहा है, डांस कर रहा है, मेरे पास आके खड़ा हो जाए. As a psychologist, I feel that if that person is going to share anything with me which is little off the track, ओके आप देखो 250-300 बंदे की पार्टी में अगर कोई बंदा मेरे पास आकर उसको पता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और वो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, मीन्स उसके दिमाग में चल रही है. ठीक है मैं ये नहीं कहूँगी वो एंजाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट होगा, शायद इसीलिए मेरे पास आके बात कर रहा है. यही सेम बंदा, अगर यही सेम इंसान आपके पास आके बात करेगा कि यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो गई, मे बी यू विल नॉट सी इट फ्रॉम दैट एंगल. यू विल लुक इट एज कि हाँ दोस्त आया उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की एंड देन ही वेंट ऑफ, राइट. लेकिन मैं एज अ और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है. माई हस्बैंड ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट इट. आई टेल हिम व्हेन आई गो बैक होम, सो माई हस्बैंड, यू वर स्टैंडिंग विद दैट पर्सन, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? I said he was discussing about, or she was discussing about her problem. I feel she needs to get counseling done. I feel like तुझे तो सारे बंदे लगते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत है.
बट है लेकिन वो क्या होता है, कहीं ना कहीं everybody is going through something in their life, correct? Again, we will not be able to label that person that this person has anxiety या this person is suffering from depression until वो हमें ये बोले कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बड़ा परेशान हूँ, मैनू बड़ी बेचैनी होती है, या नींद नहीं आ रही, भुख नहीं लगती। जब तक पेशेंट नहीं, वो बंदा आके मुझे ये ना बोल दे कि बड़े दिनों से ये हो रहा है, तब तक आई वोंट बी एबल टू figure out that this person is actually suffering from something. ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं हर एज के बच्चे की गल कर रही हूँ। पीयर प्रेशर या किसी भी तरह का पेरेंटल प्रेशर या किसी भी तरह का सोसाइटल प्रेशर इज डेंजरस। हम किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का अगर प्रेशर डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं आके तो फटता ही है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, बहुत ही कॉमन है पीयर प्रेशर। बहुत इनफैक्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम हम लोग एक हेल्पलाइन चलाते हैं जिसको हम एग्जाम स्ट्रेस हेल्पलाइन बोलते हैं। वो स्पेशली चलती इसलिए है क्योंकि हमें उस पर इतने फ़ोन आते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दैट वी डू ऑनलाइन। 24 आवर का रोस्टर चलता है। अब रात को 3-4 बजे भी फ़ोन करोगे तो फ़ोन उठाया जाएगा बाय अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट। हाउ डू यू डू दैट मैम? थोड़ा जब डिटेल से दसो, कोई एनी एग्जांपल यू वांट टू शेयर about the patient, about the calls? Yes. For example, मेरा roster है, I have a roster, there's a pay, but पहले तो जब exam stress वाली helpline, there are 2 different helplines that we run. One is the normal stress helpline, which is there 365 days. All right. Anybody who wants to get counseling done free of cost, you can call on that number and you can get your counseling done. All the certified, trained, professional mental health practitioners are sitting there across pan-India level. Right? Secondly, during exams time, we run an exam stress helpline that is specifically बच्चों के लिए. उसमें मेरे पास तो ऐसे बड़े cases हैं, बहुत सारे cases हैं, but I will discuss one of the case where I got a call and this girl has board exams. Okay. एंड शी इज़ कंप्लेनिंग कि मेरे को इतना पेरेंटल प्रेशर है ना, ओह माय गॉड, कि पढ़ाई से ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि अगर नंबर नहीं आए तो माँ बाप क्या करेंगे मेरे साथ। अब मुझे लगता है इस केस में आप बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो या बच्चे की साइकोलॉजी सोचो, वो क्या सोच रहा है। हाँ, कि मैं पास फेल तो दूर की बात, मेरे को ये डर है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या कर देंगे अगर मेरे नंबर नहीं आए। So they are also the culprits somehow. You can say. I am sure. Yeah. They are. If you're playing with this, with your child's this. Yeah. I mean, if I come and tell you as a parent, you're going for an exam, I say, do well. It's okay. Give your best. At the same time, if I come and tell you, जे तेरे नंबर नहीं आए ना, मैं छड्डांगी नहीं, कैसा लगेगा? It immediately will make you feel वो डर, वो घबराहट एकदम से बाहर आ जाएगी। आप पढ़ाई भूल जाओगे, आपके दिमाग में सब कॉन्शियसली सिर्फ यही चलेगा, मम्मी ने कहा था नंबर ना आए मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे लिखते टाइम वही करी जाएगा बच्चा। सब कॉन्शियसली वो डर कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहेगा। मैम अगर ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ imbalance maybe, or maybe safety concerns करके. What could be the reason for that? मैं दोनों औरतां दी गल कर रही हूँ, जो working भी ने ते जो homemakers. You've said it right, hormonal imbalance. हाँ, hormonal imbalance. We go through menopause, right? जी. And when we go through menopause, again it affects our mood. जी. It affects our hormones. Yes.
अंडरलाइंग सिम्टम एंजाइटी है नहीं है, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ days decide that. For a woman, there could be hormonal imbalance, there could be societal pressure, there could be work-life balance, there could be, these are the factors that can affect the women to have anxiety. For example, any woman who goes for the work, Yeah. she could be anxious that she has to come back home and cook food for the family. जी. वो एक नॉर्मल एंशियस थॉट है. क्या मैं उसको एंजाइटी का नाम दे सकती हूँ? नहीं. लेकिन अगर वो कांस्टेंट थॉट हर दिन आ रहा है, खाना तो रोज बनाना है, हाँ, है ना, वो है. एक एंशियस थॉट होना, ठीक है. उसको आप टेंशन बोलो घर जाके खाना बनाने की, उसको आप एंशियस वर्ड दे दो, स्ट्रेस दे दो, उसको आप स्ट्रेस वर्ड दे दो, खाना बनाना है घर जाके. लेकिन इसके साथ अगर उसको किसी तरह की घबराहट है, द फिजिकल सिम्टम्स, लेट मी से, हार्ट बीट तेज हो रही है कि यू नो इफ आई विल नॉट कुक फूड देयर इज गोइंग टू बी डोमेस्टिक वायलेंस फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब अब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कुड बी देयर. सो इट इज वेरी हार्ड टू से दैट यू नो women goes through anxiety more than male. They probably go through anxiety more because they have too many roles on to them. play. Yeah. And मुझे लगता है उसकी वजह से when they are not able to cope up in their daily lives, वो धीरे धीरे इतने multiple symptoms आ जाते हैं कि anxiety grow कर जाती है. It doesn't start. I always feel that anxiety एक रात में नहीं होती. It is a persistent symptom that you see in any client, in any person for minimum 2 to 3 weeks to diagnose that person with anxiety. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ. ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ ਮੈਮ? ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? देखो, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम तो स्पेशली बहुत ही नज़रअंदाज की जाती है. तभी साइकोलॉजिस्ट इज द लास्ट स्टॉप फॉर एनी प्रॉब्लम. बड़े लोग ऐसे भी हैं ਜਿਹੜੇ डिप्रेशन या ਜਿਹੜੇ किसी भी तरह ਦੀ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? 100%, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ आप कहाँ बैठते हो? हॉस्पिटल. पहले तो the first question है, आप प्राइवेट देखते हो? They do not want to turn up to the hospital. They do not want to tell the world, or they do not want, I don't know what. ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ XYZ ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ that we are going to the sessions. Correct. ਇਹ क्यों मैम? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है आजकल के टाइम पे ना इतनी अवेयरनेस है ना अबाउट मेंटल हेल्थ को लेकर. Yes. बहुत अवेयरनेस है. Still we don't have patience. Still we don't have patience. And the major reason is the taboo that is associated with it. कि असी पागल नहीं हाँ. आज भी उन्हें लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं. ये बहुत बड़ी मिथ है जो कि people are aware of it today, mental health के बारे में, but they still feel that they don't turn up. We don't have patience. What is the reason behind it? Yes. Major reason is this only, that they do not want to tell the world that they have some kind of a problem which needs to be addressed. Every time any patient coming to me, I always tell them, you've already taken a big step in your life to come here. Yes. यहाँ से you can get better.
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉमन हो गया है, कोई भी ड्रग अब्यूज लेकर या कोई भी अल्कोहल कंज्यूम कर कर, स्मोक कर कर, नींद की दवाई लेकर, there are people who are going through their lives like that only. I had a patient who had been suffering from depression for many years. Okay. He came to me after 15 or maybe 16 years of his life कि मुझे depression है. When I started taking the history, I got to know it's a 15 years old long problem. Okay. And why did he not go anywhere? Why? Is because he's like, मैं नींद की दवाई लेता था, सुबह उठता था, ठीक था. नींद की दवाई रात को 2 पैग लगा लेने, हम अगले दिन बढ़िया काम करना, पूरा दिन थक के आना, रात को 2 पैग लगाने, नींद अच्छी आ गई, दवाई ली, उठे, वो चक्कर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा. आप देखो 15 साल कोई इंसान उदासी में निकाल गया. सोशली इतना एक्टिव नहीं था. ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ काम ਮੈਮ ਇਹ ਲੋਕ काम काम. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਸਿਵੀਅਰ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. अपना ध्यान डाइवर्ट करके, काम चल लग के, या खुद ही म्यूजिक थेरेपी करके, आर्ट थेरेपी करके खुद ही अपना गुजारा कर लेते हैं. जो मॉडरेट और सिवियर वाले होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मॉडरेट और सिवियर पे जब आप पहुंच गए हो, आपको साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की हेल्प की ज़रूरत है. Then you're not able to cope up with your daily routine lives also. Whereas you're not able to eat. Depression अगर हम बात करें, you're not able to eat, you're not able to sleep. You don't want to be publicly present anywhere. धीरे धीरे आप अपने आप को इतना आइसोलेट कर लेते हो कि आप बाहर आ जाना बंद कर देते हो. तब घर वालों को नजर आना शुरू होता है कि कोई प्रॉब्लम, हंसता खेलता बंदा एकदम से सब कुछ छोड़ दिया उसने, क्यों, क्या हो गया. अगेन it has to go for minimum 2 to 3 weeks for any symptoms, for any psychological disorder for us to diagnose. मैं डिस्कस करना चाहनी हाँ एक लेडी ਦੇ ਬਾਰੇ. ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ. ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਲਾਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਇੰਨਾ ਬੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ 'ਤੇ ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਟ ਲੀਡ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ. ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ. ਫਿਰ ਦੇ ਰਨ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਟੈਸਟ, ਯੂ ਨੋ, ਦ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਵਰ ਡਨ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਓਕੇ. ਦ ਥਾਇਰਡ ਆਲਸੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਓਕੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ. ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ. ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੈਟ ਵਰਡ ਕਮ ਅਪ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ DMC, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BP ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਇਆ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ. ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਅਨਅਵੇਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ. ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਅਪ. थैंक यू इमान फॉर एड्रेसिंग दैट. मेरे को लगता है ये जो ब्यूटी है ना काउंसलिंग की, ये लोगों को ना अभी तक समझ नहीं आई है. उन्हें आज भी लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल 1500-2000 रुपए क्यों दूँ बातें करने के लिए. आप समझ रहे हो? मतलब उन्हें इसकी, मैं ब्यूटी तो क्या ही वर्ड होगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस, इसका लेवल ऑफ
मेकिंग सो मच डिफरेंस इन समवन्स लाइफ है काउंसलिंग कि अगेन वी आर द लास्ट स्टॉप यस. फॉर एनी पेशेंट. जब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जब वो पूरे हाथ पैर मार लेते हैं Exactly. ना, सब कुछ कर लेते हैं ना, आपका बिल 50-60 हज़ार का बना लेते हैं ना, उसके बाद आपको ये बोलेंगे या जो पिल्स आती सुला देंगे. हाँ. देखो वो तो चलो आई विल नॉट गो इनटू दैट Yes, व्हाट ma'am. काइंड ऑफ मेडिसिन्स दे प्रोवाइड बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड इनफ टू इवन कमेंट ऑन इट. जी. लेकिन मैं आपको एक 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 टेक्निक बता रही हूँ या एक ट्रेंड बता रही हूँ क्या है जो आज तक सेम चल रहा है. कि हमें पेट की दर्द हो रहा है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हमें घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है. हमें रोना आ रहा है, हमें भूख नहीं लग रही, हमने सबसे पहले तरेलियाँ आ रही हैं, हमने सबसे पहले मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएंगे, जी. फिर हम गैस्ट्रो के पास चले जाएंगे. मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ये करते हैं. जी. जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब हम हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, वो हिस्ट्री यहीं से शुरू करते हैं कि असी ए डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗਏ. ਮੁੱਦਾ किसी ने नहीं निकाला. दवाइयाँ टेर खा के इतनी मोटी फाइल लेके आ जाते हैं हमारे पास. हाँ. सारी अपनी हिस्ट्री लेकर आ जाते हैं. निकलता क्या है? डिप्रेशन. डिप्रेशन. निकलता क्या है? एंजाइटी. निकलता क्या है? मे बी स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर. मतलब किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर निकलता है. लेकिन वो पेशेंट कहाँ कहाँ से टेस्ट कराकर, डॉक्टर्स को दिखाकर, घूम फिर कर हमारे पास पहुँचते हैं. और फिर हमारे विद गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑलवेज सीन मेरे पेशेंट्स बहुत कुछ ट्राई करने के बाद 7 to 8 सेशंस के बाद दे गॉट बेटर. They are doing so much well in their lives. Yes. I had a girl who was around 24 years old. Again, same anxiety patient, feeling low, palpitations, body shivering, not able to cope up. And why I'm sharing this today because I have done online counseling with that girl. मैं इस लड़की को कभी मिली नहीं. Okay. I haven't seen her. I have only done online counseling with this girl. You feel so happy कि तुसी किसी को कितना ठीक कर I लिया. have, which is what I feel so great. That's why you always say beauty. You have used the word beauty a lot I many am times. very passionate about it. जी. So coming back to this girl, I took her I think 10 to 12 sessions. She started with severe anxiety. She got all her tests done. Everything was done through counseling, through art therapy, only online that we did. Yeah. Today, she's running a beautiful business on her own in Delhi. That's great. She is a big stylist. She's running her business. She's doing so well in her life. That's the beauty of counseling. That's the power of counseling, which people really don't know about. They think 1500-2000 रुपए देके क्यों गल्ला करन जाना. So मैम ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ like with the meditation, exercise, yoga, with what you deal with it? Meditation, yoga, all of these are the techniques that we जी. suggest or that we recommend to our patients. Okay. Again, I'll tell you in a very small way, what is counseling? In a counseling setting, we do not tell the patient what they have to do, what they don't have to do. Through them, they get questions, they come up with their questions and they get answers to their own questions. Depending on what kind of psychological disorder is, for example, if we are talking about anxiety, इसमें we definitely recommend them that आप breathing exercises कर सकते हो, आप meditation कर सकते हो, आप there is a very beautiful technique which we say 3 things observation technique where we suggest a patient that you step out of your comfort zone, go out in nature. कोई भी 3 ब्यूटीफुल चीज़ें देख लो, कोई भी अपने आसपास की तरफ देखो. Why we do it? Because we want that patient to break the thought. Okay. Anxiety क्या है? जब हमें घबराहट शुरू होती है हम ओवरथिंक शुरू कर देते हैं. एक ही थॉट रखते हैं. Zillion thoughts आने शुरू हो जाते हैं बार बार.
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਹੈਵ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡੂ ਬੈਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਓਕੇ ਡੂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in that case we also say that why don't you go out see any beautiful things around you what it's doing is it's just breaking your thought जब ध्यान divert हो गया thought break हो गया you might feel better you might feel better that's it ਓਕੇ so ਹੋਰ these ਕੀ are the ਮੈਥਡਸ small methods these are small techniques that ਮਿਊਜ਼ਿਕ you ਕਿਸ can ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ practice. ਕੰਮ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਟਸ ਹੈਲਪਿੰਗ Oh, I always feel music is very therapeutic. Okay. Art and music, I personally feel it's very therapeutic. And today, being a certified art and movement based therapist, I can definitely say that it plays a very, very important role in any psychological disorder. There are few psychological disorders in which art and music plays a very, very important role. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਆਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ We ਇਟ ਯੂ use different mediums. ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕੀ For ਕਰਦੇ ਹੋ example, I had a PTSD patient, which is post traumatic stress disorder Okay, ma'am. patient. This girl is again 14, 15 years old, ਓਕੇ who had a traumatizing childhood. ਓਕੇ She wasn't comfortable talking about it that much, ਯੈਸ but through art, she could draw all her trauma. It came onto the paper. ਓਕੇ ਜਸਟ ਅ ਡਰਾਇੰਗ ਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਸਮ Again, ਮੂਵਮੈਂਟਸ through ਆਲਸੋ art therapy, again, I'm telling art therapy, you don't have to be perfect in your drawing skills. Okay. You don't have to be an artist for Hanji. that. For example, this girl drew, it's just an example that I'm sharing. Hanji, She hanji. drew, you can write also, by the way. Achha, When achha. you draw something, Hanji. this girl drew something, and side by side, I was isolated. She made the room, Ji. and then she wrote her thought, I was isolated. ਓਕੇ I saw, then she made a room, mom, dad hitting each other, the dad hitting. She wrote, I was scared to see that. Are you understanding the beauty of art? ਓਕੇ She wasn't verbal about it. She did not tell me verbally. ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ She ਦੱਸਤਾ drew it and she wrote it. She wrote it also. Okay. Even if she hasn't written it, when we were discussing about it, Yes. this is how we go about it. That, are you comfortable discussing about it? Is it you? Who are they? What are they doing here? That is So you were raising the questions. yes. It's not direct questions, but what she's drawn when we try to ask that girl, she came up with, this is what was happening. This is what I saw. So art became the medium through which I could connect with that girl. And what about the movements? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ movement ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ hand Yes, movement so we ma'am? also do it's a movement therapy where there are different music that goes on behind, and we can use it in a calming techniques. We can do icebreaker activities through art, through music. So again, it's we usually do it with the patients who are suffering from anxiety, Okay. who are suffering from PTSD, ਅੱਛਾ and we cannot practice. Again, there is a lot of disorders where movement can really trigger also. ਹਾਂਜੀ Music can trigger also. ਅੱਛਾ Yeah. It triggers? Yeah, it could. It depends. So it is very important for a psychologist to decide when to introduce art or movement with the patient. ਅੱਛਾ Maybe music would be a triggering point for that patient, so we can never introduce music to them. ਅੱਛਾ Obviously, we cannot. Then it will trigger that patient. It can again make the position more uncomfortable for that. For as a psychologist, it's very important for us to make sure that any kind of distractions or any kind of, our rooms are very neat, clean, very less sceneries and all. The reason is that we do not want patient to be get distracted yes and or get uncomfortable with any kind of scenery, with any kind of something. Anyone, maybe a OCD patient coming to me,
ओके हाँ Too many OCD things भी on my table can trigger. हाँ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ Correct. प्रॉब्लम तो मतलब इतनी आसान नहीं है काउंसलिंग और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है. ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ I ਹੋਣਗੇ had a patient जिसने rigid चाकू patients निकाल ਹੁੰਦੇ दिया होंगे था. चाकू निकाल ली हाँ. सी I क्यों? had this schizophrenic patient. सॉरी व्हाट डिड यू से There was this schizophrenic patient that I want to came tell into my my cell. viewers what is this word means. Can you just tell the viewers? Schizophrenia again is a psychological disorder Acha, where the patient hallucinates, they have Okay. delusions, they have no connection with the reality, they are detached from the real world, they live in their own world, Okay. they assume, they presume everything. For them, you know, पर चाकू they're निकाल basically लिया like से paranoid हाँ patients. So when I told them that we are about to close the session, so every Acha. time we close the session, we have a closure, last 5 minutes, where we want to ask the patient how you're feeling now हाँ जी कितना दा फील कर रहे हो after तुसी 45 minutes or after 30 minutes. हाँ When I asked this patient, he wanted to have more session, elongated session with me. He took out his whole this thing, you know. He did not do this, but he's like, मेरे कोल ए भी है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाना चाहता ये वो है ना. And you know that was the calling for me that I always tell, you know, outside when I'm sitting in the cell, that if I ring the bell, you run up, हाँ you come. it's a matter of safety now Yes. no? Yeah Because again, schizophrenia, bipolar, these are all very, very severe cases where patients are really not aware of their surroundings. now ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ Okay. ਓਕੇ ਲਾ ਆਸਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ I think that triggers the patient more when you tell के relax करो कुछ नहीं है instead of validating you're trying to actually make the patient feel more uncomfortable when you say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ yeah like I'm really having a problem and you're telling me to relax, it's not possible. ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and that all these symptoms are persistent for more than 2 to 3 weeks, please visit a mental health practitioner. और ये कोई दसदा नहीं है ये कोई वो नहीं है आप प्लीज हेल्प लो हाँ you know reach out to the mental health practitioners, talk to them. I am sure you the sooner the better. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ हाँ गूगल करके सारे डॉक्टर उसके दरवाजे खड़का के we are the last stop. yeah But I would say the sooner the better. Please reach out to a psychologist, reach out to a mental health practitioner and you know address your problem. Yeah. You'll get better. yes anxiety plus coffee खतरा है या ठीक है थोड़ी ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ Excess of ਚਾਹ ਪੀ everything ਲਓ is bad. ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ पर ਕਾਫੀ ਲੈ लोगों ਲਓ को हेल्प भी करती है मुझे लगता करती है है? लेकिन अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਮ मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जो कैफीन ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ caffeine intake ਤੋਂ ਬਾਅਦ anxiety ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ and they had seen that every day that pattern was done every day ਕਿ मैंने आज कॉफ़ी पी hot ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ so there are times there are patients they have been drinking coffee for many years and suddenly one day it started putting them into palpitation state. okay So that is purely anxiety. ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ Again depends. There are people who will just want to sit back. बट मैम वो ज्यादा नहीं it इफेक्ट could करेगी be जो very बंदा dangerous. चुपचाप रहे हाँ, it could be very dangerous. Yeah. So it is very important for
any anxiety patient or any anxiety person, if they're going through any kind of anxiety symptoms, they must reach out for help. They must, even if that means talking to a friend can help them, talking to any family member can help you. Talk. टॉक That is really going to help you. एग्जाइटी की कमज़ोर दिमाग ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ? ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ मुझे लगता है एक ऐसी बीमारी है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮਾਈਂਡ, ਬਾਡੀ, ਸੋਲ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So any kind of problem, whether that's psychological or it is not psychological, it will affect your mind, body and soul. ਮੈਮ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਫੇਲਿਅਰ, ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ? मुझे लगता है एंजाइटी वाले पेशेंट इन्ना तीनों चीज़ां दे गो थ्रू इट। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। हाँ, वो मेरे को लाके एक क्वेश्चन ही करते कि मैं हार गया, मैं फेल हो गया, या मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, या मैनू कुछ हो जाएगा। नहीं, वो मेरे तो आगे सिर्फ यही पूछते हैं ਅਸੀਂ ठीक हो जाएंगे, या वो मेरे तो ये पूछते हैं सानू क्यों। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? और ਇਹਦਾ आंसर साढ़े कोल तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं। ये आंसर भी उन्हीं के पास होता है और वो खुद ही थ्रू काउंसलिंग डिस्कवर करते हैं। नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ काउंसलिंग। ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਨਾਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ? हाँ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े डिस्कस अब करे। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 10-10 12-12 सेशन 15-15 में से लिए हैं, they got better and they never turn up। And the best part of I feel for me as a psychologist is to even forget about them। हाँ I will also, even if you meet me publicly, I will not acknowledge you that I know you। I will not do it until you come and say thank you so much or say hi, hello with, you know me, you want to say hi to me। I will never come and tell you hi, never। Ethically, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। मेरे को शो ही नहीं करना है। अगेन मैंने बोला ना कि मतलब according to my ethics also, I will make sure that I do not build any relationship with any of my patient। There are certain ethics that we are very clear about it in the beginning of the, Especially emotionally। yes, Yeah। we can empathize with the patient, we will never sympathize with the patient। और ये दो बहुत बड़ी चीज़ है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਮ। empathize करना। नहीं तो तुसी स्टार्ट आप रोना स्टार्ट कर मैं दोगे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही भूल जाती हूँ कौन क्या करके आई हूँ मैं। अच्छा, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एट होम। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। करेक्ट। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਲਕ ਜਾਨ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਥ ਸੀਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर कमिंग टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि एंजाइटी इज वेरी कॉमन। हाँ जी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, yes, people are aware of it, they must reach out to a mental health practitioners, they must take any kind of help if they Yes. think that they are suffering from anxiety। So ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਰੂਟਫੁਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ